Today, the Nicobar Islands is in news again. And it is not for its tropical rainforests or its beautiful beaches, but it is for Great Nicobar Project. एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इंडिया के मिलिट्री और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Hello friends, my name is Uttam Verma and you're watching Study IQ. So in this video, we will study what you mean by Great Nicobar Project and what is the issue of nature's legal rights. What is it? It has revived the classic debate of environment versus development. So let us see the index. We'll study Great Nicobar Project, the significance and criticism of the project, and the nature's legal rights, and last we will solve PYQs. So let me start with one background. Imagine a place like Nicobar, which is rich with endemic species like Nicobarese port, like saltwater crocodiles. It has mangroves, it has corals. It is home to India's PVTGs, or particularly vulnerable tribal groups like Shompenes, like Nicobarese tribes. अब एक एरिया इतना ज़्यादा रिच है, just imagine that JCBs are coming in, bulldozers are coming in and ravaging the area for some project. So it has the potential to harm the pristine ecology of that area, and that is Great Nicobar Project. So let us start by seeing the importance of the region, because it is called as living ecological laboratory. It is a kind of ecological lab. So it is a biodiversity hotspot where it has more endemic species, endemic vegetation. It has saltwater crocodiles, उसके कुछ unique species हैं. It acts as a carbon sink. Around 70 metric ton of carbon dioxide is absorbed by this island, है ना, ये जो forests हैं पूरे. Then it acts as a climate regulator. It regulates the climate. It is rich in marine ecosystem. It has sea grasses, it has meadows, it has corals, it has mangroves in the region. तो marine ecosystem में बहुत ज़्यादा rich है. उसके बाद it is home to PVTGs like Shompene tribe, like Nicobarese tribe. So it is rich in PVTG tribals. Also, it has one biosphere reserve which is called as Galathea Bay, recognized in 2013. तो गैलेथिया बे भी है यहाँ, जो कि यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है. सो इतना ज़्यादा कल्चरली एंड इकोलॉजिकली रिच रीजन हैज़ सम काइंड ऑफ थ्रेट. नाउ threat is by Great Nicobar Project, which is kind of a mega development plan, जहाँ 70,000 crore, 70,000 crore is poured in, implemented by Andaman and Nicobar Island Integrated Development Corporation, जो क्या करेगा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा, बिकॉज इट द पोजिशन और द लोकेशन इज वेरी मच एसेंशियल इन द इंडियन ओशन रीजन. यहाँ इट विल डेवलप इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल लाइक पोर्ट करेगा, विच इज अ डीप सी पोर्ट. It will also develop gas solar power plant which will provide energy security to that area, and उस island को depend नहीं होना पड़ेगा mainland से for its diesel and other needs. It will also create greenfield international airport. It will provide major connectivity boost to the region. It will provide township, जहाँ it will create residential facilities, right? It will integrate the mainland more. It will increase tourism also, and it aligns with India's maritime vision 2030. एक ऐसा विजन जहाँ इंडिया खुद को एक मैरीटाइम सुपर पावर के रूप में देखता है, बाय इन्वेस्टिंग इन शिप बिल्डिंग, बाय इन्वेस्टिंग इन पोर्ट्स ऑल अराउंड द रीजन, पूरे इंडिया में. तो दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज वेरी मच क्रूशियल टू दिस इंडियाज मैरीटाइम विजन 2030. नाउ लेट अस सी द इशू इन दिस. तो व्हेन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज हैपनिंग, though it is very much essential for our national security needs, for our maritime security needs, but it has some issue, because it will divert over 13,000 hectare of pristine ecology, untouched ecology, है ना, जिसमें tropical rain forest है, right? So there will be huge ecological loss. It is roughly equivalent to Chandigarh, basically the area of Chandigarh. तो एक बार में पूरे चंडीगढ़ जितना एरिया को हटा देना, it will lead to huge ecological loss. It will lead to huge loss of flora and fauna. It will lead to huge biodiversity loss. Similarly, there is one more concern, because the tribal council of the Nicobar Island, there is an allegation that they were not consulted properly before the project, before the diversion began. So it is a major issue. Now let us see the importance of this project.
So it has strategic and geopolitical significance. पहला जो है, it is a gateway to global trade because Malacca trade और Malacca Strait जो है, Malacca Strait जो है, which controls around 40% of the world's trade is nearby this region. So Andaman and Nicobar Island, especially Nicobar Island में, it is kind of a gateway to that choke point, which is a very crucial choke point. Similarly, it acts as a maritime hub potential for India because it will provide a deep sea port to India. अभी इंडिया कोलंबो या सिंगापुर के डीप सी पोर्ट्स पे डिपेंडेंट होता है. अब इंडिया का खुद का एक मैरीटाइम हब बनेगा. इट विल एक्ट एज अ मैरीटाइम हब and it will increase prosperity of the region. It supports India's Sagar vision, security and growth for all. So India can be a very important maritime player by implementing this. जहाँ इंडिया easily humanitarian and disaster relief operations conduct कर सकता है across Indian Ocean region through this Great Nicobar project. It has geostrategic deterrence because it will act as a counter to the increasing influence of China. It will act as a counter to China and Chinese strategy. तो Chinese strings of pearl strategy है, उसको ये counter करेगा. Now it has economic significance because as of now foreign shipping जो इंडिया में कम है comparatively, with this project they will come more and it will increase in FDI, it will increase in more trade, more shipping networks. It will generate huge direct and indirect employment क्योंकि जब construction हो रहा है, it will also generate employment of around 1 lakhs and उसके बाद भी it will generate employment for local people. Then it will lead to Atmanirbhar maritime trade because we'll have basically our own maritime hub. We'll have our own deep sea port. As of now we are dependent on Colombo और श्रीलंका. वहाँ deep sea big ships आते हैं, वहाँ से इंडिया आते हैं, and through this we can have self-sufficient maritime trade. It will lead to regional development because island needs special kind of treatment to develop. So there is basically better connectivity with the coming of ports and airports. It will lead to better regional development of the region. Next, it has national security implications where surveillance capabilities of India will increase because your region है Andaman and Nicobar and location के surrounding, it is issue of oil spills exists there, issue of piracy also exists there, issue of increasing or growing influence of China exists. इस बीच में भी need increased surveillance capabilities. We also need rapid response to this oil spills or any kind of disaster because it is also a seismic zone, it is also a tsunami zone. तो उसके लिए हमको rapid response की भी जरूरत है, right? So humanitarian and disaster response and relief is possible through this project. It will also help in having joint naval exercises with like-minded countries like Quad grouping, like Southeast Asian countries, and it will help India to emerge as a key naval player in that region, a key security provider which will act as a counter to Chinese maritime security. It will also lead to upgradation of military infrastructure of the region. मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का है वो अपग्रेड होगा इससे. इट विल लीड टू मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जहाँ मैरीटाइम नॉलेज, मैरीटाइम रिस्पॉन्स बढ़ेगा इंडिया का, एंड इट इज क्रूशियल फॉर आवर मैरीटाइम विजन 2030. इट विल लीड टू एनर्जी सिक्योरिटी, है ना. तो जो आपका जो पावर प्लांट है, इट विल गिव यू गैस एंड सोलर पावर प्लांट है, इट विल प्रोवाइड यू क्लीन एनर्जी, एक्सेसिबल एनर्जी, 24/7 एनर्जी. अभी डीजल के लिए हम लोग जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इट इज डिपेंडेंट ऑन मेनलैंड. नाउ ऐसा नहीं होगा, इट विल प्रोवाइड दैट्स क्लीन एनर्जी, तो एनर्जी सिक्योरिटी रहेगा. इट विल ऑल्सो हेल्प टू मिनिमाइज carbon footprint and reduce pollution. Similarly, it will reduce mainland dependence basically. So this is increasing Atmanirbharta of the island and providing regional development of the region. It will lead to strategic autonomy because it protects maritime choke point, because the location is very much crucial to protect the maritime choke points like Malacca Strait. It strengthens India's vision of blue economy, fisheries, coast development, ports development, etc.
It will help India to assert its sovereignty in the Indian Ocean region, जहाँ Chinese dominance is increasing. So it provide India with a strategic autonomy. But there are challenges. But there are challenges to this project with respect to ecology, with respect to the way it is carried out. So first challenge is development versus decentralization debate, because this project wholly is centralized by central government. So there is a allegation that there is ignorance of island specific ecology, ignorance of planning with respect to island specific ecology, कि आपने मेनलैंड की जो प्लानिंग है उसको आपने थोपने की कोशिश की है आइलैंड में. देयर इज प्रायोरिटाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर लोकल कल्चर और बायोडाइवर्सिटी. आपने लोकल्स के वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो कल्चर है, उसको नीड्स को आपने किनारे रख दिया. एंड व्हाट यू डिड, यू प्रायोरिटाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर एनवायरमेंट और इकोलॉजी. थर्ड, दिस इज डिजास्टर प्रोन जोन. यहाँ सुनामी हैज बीन इन 2004, frequent earthquake, frequent area of volcano eruptions होते रहते हैं. It is disaster prone zone, और इस एरिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, it will be harmful for that infrastructure. Second, the concept of ecological democracy. So there are democracy gaps in the way this project is being carried out. There is allegation कि tribal council जो है, जो ग्राम सभा की जो काउंसिल होती है, इट वाज नॉट कंसल्टेड प्रॉपरली बिफोर इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, एंड नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स को ओवर पावर करते हुए या डोमिनेट करते हुए लोकल कंसर्न्स को साइड कर दिया गया. सो इट वायलेटेड द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006. इट वायलेटेड द स्पिरिट ऑफ नियामगिरी जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डोंगरिया कोंड ट्राइब्स के फेवर में दिया था कि भाई लोकल कंसेंट इज मैंडेटरी. Gram Sabha consent is mandatory for implementing any project. So it has violated these principles. Next challenge is the governance gap, like it has centralized decision making, जहाँ locals का say थोड़ा कम है. It has violated the provisions of Forest Rights Act, and there is international obligation on India because this Galathea Bay is a part of UNESCO Biosphere Reserve. तो इंडिया का ऑब्लिगेशन है इसको प्रोटेक्ट करना. अगर इंडियन गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देयर, सो इट विल violate the ecological sanctity of the region, and it will lead to affect basically Galathea Bay. So it is violating international obligation of India. Next is, there is kind of shift from the legal philosophy of nature's rights. So this is a very interesting philosophy, बहुत interesting philosophy है. This debate is arising because अब नेचर को पैसिव नहीं एक्टिव रूप में देखा जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जहाँ नेचर के राइट्स की बात की जा रही है. नाउ द डिबेट इज दैट वी नीड टू रिकॉग्नाइज नेचर. व्हाट इज नेचर? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचर? ऑल द रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन एंड इकोसिस्टम शुड बी ट्रीटेड एज लीगल पर्सन्स. उनके राइट्स हैं, with rights to exist, right to thrive, and right to regenerate. So it is shifting the perspective to nature as sole property of humans to nature as right holders. अब nature खुद कैसे right hold करेंगे? Through their guardians, right? So इसका origin देखते हैं हम लोग, ये हुआ कैसे था. तो nature rights में क्या होता है? Human are acting as a guardians and not owners of the nature. It is kind of trusteeship model given by Mahatma Gandhi. So humans act as the guardians and not owners of the nature. Now every natural entity has right to exist and evolve, which is a very progressive point. It has right to restoration. अगर ये इसको harm हुआ है तो then it has right to restoration. It has huge implication because आपके rivers, lakes जो pollute रहते हैं, they have right to restoration. Then right to be represented in court through guardians. So this guardians का ड्यूटी क्या है कि वो नेचर और नेचुरल एंटिटी को कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे. सो इसका जो ओरिजिन है, इट वाज ओरिजिनेटेड इन 1972 बाय क्रिस्टोफर स्टोन इन हिज एसे शुड ट्रीज हैव स्टैंडिंग. द आइडिया वाज कि कोर्ट जो है सिर्फ कंपनसेट करता है ह्यूमंस फॉर एनवायरमेंटल डैमेज. एनवायरमेंट डैमेज हुआ तो ह्यूमंस को कंपनसेट कर रहा है, बट नेचर इससे एक्सक्लूड हो गया, नेचर को कंपनसेशन कुछ नहीं मिलता. सो व्हाई नॉट गिव नेचर द राइट टू सू
कैसे अब नेचर सू करेगा? थ्रू देयर गार्जियंस. So people are acting as a legal guardians to the nature and they are suing others if they have violated the sanctity of nature. So it has influenced globally different kind of environmental laws in Bolivia, in Ecuador, in Colombia and in western countries like New Zealand. इंडिया में भी कुछ देखने को मिलता है, where उत्तराखंड हाई कोर्ट in 2017 declared Ganga, Yamuna, Gangotri and Yamunotri as living legal entities and it appointed guardians, state officials as legal guardians जो कि protect करेंगे. Fine. So it provided legal recognition to nature. It provided legal personhood to Ganga and Yamuna. It recognized the right to existence, right to flow and be protected from any kind of pollution. त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी 2019 में it extended the concept of right to life जो कि आर्टिकल 21 के अंदर है and it extended to entire animal kingdom. So the idea of appointing guardians for natural entities remains a compelling model, है ना. इसको हम implement कर सकते हैं in this Great Nicobar project as a solution. So the way forward is we need to ensure that Gran Sabha consultations or tribal council consultations happens regularly and उनका से important होना चाहिए so that we can uphold the spirit of Niyamgiri as well as Forest Right Act. We need to recognize the ecological personhood where nature should be considered to be given legal rights. There should be island specific EIA or environmental impact assessment and it should be island specific. And last we need to reorient our development goals to include ecology in it. So GDP जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बेसिकली ग्रॉस इकोलॉजिकल प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए. सो इन दिस वे व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ दिस प्रिस्टीन आइलैंड्स और नेचर. नेक्स्ट इज यूपीएससी का जो क्वेश्चन है 2019 में यूपीएससी ने पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शॉम्पेन ट्राइब फाउंड. ये 2009 का क्वेश्चन है, विल सॉल्व इट. तो वेरी इजी, निकोबार आइलैंड्स ऑब्वियसली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2017 में पूछा गया था, आई वुड वांट यू बिकॉज यू सी ग्रेट निकोबार और निकोबार आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर यूपीएससी. तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में सॉल्व करेंगे, कमेंट में आप आंसर देंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार. हियर आर 4 ऑप्शंस, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एंड श्रीलंका. सो प्लीज डू टेल अस इन कमेंट्स बिलो. थैंक यू.